So the class was informed of the change in time. Yes. So the timing for the subject has changed, and your geography classes will be from 2:30 to 12:30 to 2:30. So good afternoon to all online students. Kindly confirm the audio and the video. And sir, the homework is done. All the questions, if you have pertaining to geography, world geography, please ask. You can ask those questions. So हमने क्या homework दिया था? The Central American countries, 7 countries north to south with their capitals. And what else? Davis Strait, what does it connect? 2 हो गया. और कुछ? बस यही 2 था. Okay. Perfect. So you've gone through the atlas. Everyone carrying the atlas also? Yes. So your own atlas, please do that. All okay. So audio, video, all okay. Now I am carrying 3 books also. This is 6th class NCRT. This is 6th class NCRT. तो जीसी लियोंग लेना है, अभी नहीं लेना है. जीसी लियोंग इसके बाद करेंगे. तो 6th NCRT. This is your 6th class NCRT. It's a very, very small little book. Around 50 pages. Around 50 pages. It talks about, I am reading the content page, Earth in the solar system, latitude, longitude, motions of the Earth, rotation, revolution. Then maps. What are maps? Then major domains of Earth, lithosphere, atmosphere, hydrosphere, biosphere. Have we done that? That was my first thing. I want you to read these 50 pages and read these pages at least 3 times. Is it okay? So if you read this book, time to read it again. पढ़ लेंगे. Tomorrow is Christmas, so it's a holiday. तो कल तो छुट्टी है. कल छुट्टी है कि नहीं? कल का कोई अनाउंसमेंट है? इधर ऑपरेटर, कोई अनाउंसमेंट है कल के लिए, छुट्टी के लिए? तो पता कर लो. एक बार पता करके मुझे बता देना, मैं अनाउंस कर दूंगा. सो कल छुट्टी होनी चाहिए क्रिसमस के लिए. तो मनाओ ना मनाओ, माना AQI थोड़ी वो है, बट सेंटा फिर भी आ सकता है, ऐसी बात नहीं है, आएगा. ठीक है. सो मेरी क्रिसमस के विशेस इन एडवांस. तो ये 6th हो गया. इज एवरीवन ओके विद 6? सो पीपल आस्क मी सर विच बुक. उसके बाद वी आर इन द 7th वन. दिस इज कॉल्ड आर एनवायरनमेंट, फॉर विच वी मस्ट बी अवेयर ऑफ. Aravali is a very big part of our environment. Now this book that I am talking about, this book has around 60 pages. नहीं, ये भी 50 pages. 50 pages का another book. So generally a 50 page book would take around 2 hours to finish. I would want you to read them again. So in this they tell us what is environment. Basic things. What is environment? Yes. उसके बाद inside our earth, what is inside the earth and what is changing on the surface of earth, what is air, water. So this is actually the introduction of lithosphere, atmosphere, hydrosphere, biosphere in detail. So chapter book of 6th and 7th, can I expect you to have them? Whether you have a soft copy or a hard copy does not matter. Hard copy, soft copy does not matter. These are 50 pages of very basic language. Very basic language. तो ये होना है. जिन लोगों ने एक बार पढ़ लिया, please do it the second time. I want 2 times it should be done. 2 times. First time when you are reading as a beginner, I am telling you, do not underline anything. First time, do not underline anything. You will have a tendency otherwise to underline everything except the page number. I don't want that to happen.
तो सब कुछ अंडरलाइन हो जाएगा. पहली बार में नो अंडरलाइनिंग, सेकेंड टाइम में नाउ दैट यू नो व्हाट द बुक इज अबाउट यू शुड बी अंडरलाइनिंग. इज एवरीवन ओके विद दैट? ठीक है. मुस्कान, अगेन एंड अगेन बेटा यू राइटिंग द सेम कमेंट. जी सिलियोंग डू नॉट रीड इट. अभी मैंने नहीं कहा. तो बुक्स आर क्लियर. एटलस एवरीवन शुड हैव. वी वर टॉकिंग अबाउट द अर्थ आर हैबिटेट. बुक नेम, भाई देखो यार, अब बुक नेम भी है और ये भी. सर नाम बताओगे तभी होगा. पहचान कौन, स्वयंवर नहीं हो रहा है. किताब है एनसीईआरटी की वेबसाइट पे फ्री मिलती है. It is freely available. Sixth and seventh NCRT. Let's not make a mountain out of a molehill. Why did I get these books? So that you can look at it. ये भी बता दिया. What is it about? What is Earth? What are its motions, rotation, revolution? What is latitude? What is longitude? This is in sixth class NCRT. It also tells that geography has 4 sections: lithosphere, atmosphere, biosphere, hydrosphere. Seventh class NCRT is about expansion of lithosphere, atmosphere, hydrosphere and biosphere, and they combine it to make it environment. Is it okay? That's the basic vocabulary. 2 times होना चाहिए. Okay. Now we are looking at North America. Narrow stretch of water. We looked at the strait also. We were here. Everyone with me on this? Everyone with me on this? Basic things we had talked about. We are going to talk about, or we are going to continue with. We are going to continue with NCRT. Done? Marker, worker, सबके पास है. Okay. So what are we supposed to study? What are we supposed to study? Syllabus से study करें. So what is the syllabus? Everyone on the screen. Salient features of world physical geography. Salient means key features of what? Physical geography. So what is physical geography? Lithosphere, atmosphere, hydrosphere and biosphere. That's physical geography. So when I say salient features of world's physical geography, so what should I study in North America? North America ka salient features of North America physical geography means the lithosphere, the atmosphere, the hydrosphere and biosphere. Clear? For North America or for all continents? All continents. And if we have done all continents, that would meet or make it the world. So that's what we are going to do. Next is distribution of key natural resources across the world. Now this part is called economic geography. Somebody asked, I asked that person to ask it again in the class, but nobody answered. So distribution of key natural resources across the world and the factors responsible for the location of industries. So this is economic geography. In general geography, we have certain phenomena like earthquake, tsunami, volcano, cyclones. Why they are coming, we need to understand that. This is about that. Flora and fauna. I told you class 7th NCRT environment will tell you about flora and fauna also. What kind of questions are coming? Questions bhi ek baar dekh le. Let's have a look before we get into that. So these are the questions. What are the environmental implications of reclamation of water bodies into urban land use? Explain with examples. Good level question, yes or no? So what is a water body? आपके शहर में एक तालाब हो सकता है. So pond is a water body. Yes. A lake is a water body. A river is a water body. A wetland is a water body. Is everyone okay? Now what we are doing in Mumbai is we are planning to chop off those wetland mangrove areas. Now what do the wetland mangrove areas do in Mumbai city? When a storm comes or strong waves come, so what will happen is the waves will strike the coast again and again and they will cause a lot of erosion. But in between, if we have mangroves, what will happen? Waves, their force will be brought down. Will they give protection to the mangrove, to the coastline? Coast को protection दे दिया. Second is there are a lot of wastes coming from the city and being dumped into the ocean. The mangroves will stop them also. So they are in the middle of hydrosphere and lithosphere. So they are in between. Such ecosystems are called ecotones. Now if you chop them off, big problem or not? So they are asking that in cities,
if you are reclaiming the water body. What is reclaiming the water body? You chop off all those and you create a coastal feature like a hotel over there, like a port over there, like a terminal over there. When you are doing that, you are reclaiming it. You are reclaiming it. So they are saying, if you do this, what will be the problem? So that's a question which has been asked. A similar thing happened in Bangalore. Bangalore is known for its lakes. It's known for its lakes. So what happened is the lakes, where do they get water from? Lakes will get water from some flowing water. But the problem is Bangalore is at a height of 1 kilometer. So the water does not go to Bangalore. Bangalore's lake will get water only through rainfall. Get that? So when rainfall comes, those are huge basins in which water will be there. So Bangalore's water needs will be met out of this. But the problem is that when rainfall is not there for the remaining part of the year, these lakes will be dried up. Yes, this is the time when developers, urban developers, building makers, and all, they have got permissions to use that for land use. What they do is they fill up those lakes and they have constructed huge malls and building structures over there. So this is called what? Reclamation of water body. आपने उसको ले लिया, अब हो गया. Similar things are we are talking about in Aravali. Though Aravali we are not talking about water bodies. Aravali is not the example. But the human encroachment of the environment, is it creating problems or not? All contemporary things, they are asking, if this question was in 2021, I'm sure 2026 they can always say what are the environmental implications of mining in Aravali for the North Indian or Northwest Indian belt. ये सारी चीजें, people ask me, sir, how geography and current affairs are related. I believe geography is a subject which is pretty current, and it in a way helps us know what questions to expect. In history, when you are preparing, you do not know what kind of questions will come, but in geography, there is a very big chunk of geographic questions which are based on what is happening around us. So whatever is happening in the current times, that can help us as an understanding of that. Mention the global occurrences of volcanic eruptions in 2021 and their impact on regional environment. Let me talk about 2025. Haile Gubbi is a volcano which erupted in Ethiopia recently, because of which this entire region, the air traffic was blocked because of that Haile Gubbi. And to that extent, Indian cities, including Delhi, started saying that the pollution is happening because of the Ethiopian pollution coming and doing that, as if their blame on Haryana and Rajasthan was not enough. अब उनका Ethiopia से माल आ रहा है. So you can imagine, दोनों question current affairs mains question, but क्या आना चाहिए? You should know the impact of these things. Which book to start with? Our Environment, class 7th NCERT. So I really want the respect which is due to NCERT book should be given to them. So practically I am saying it is not just something, कि NCERT पढ़ लीजिए. This is going to help us. Get that? Briefly mention the alignment of major mountain ranges of the world. So how the major mountain ranges of the world are aligned. Remember our syllabus says salient features of, yes, salient features of physical geography. So how are the mountains of the world aligned? Are they north-south or are they east-west? We know of one mountain range called Himalaya. How are they aligned? East-west. Another one which we are about to read is North America Rockies. How are they aligned? North-south. So first of all, my job to tell you where are the mountains of the world, plateaus of the world, how are they aligned. Then UPSC will ask us a question, how this alignment, once you know the alignment, briefly mention the alignment, then explain their impact on the weather conditions. So they are doing a connection between world geography and general geography, the principles. So my job is to first teach you those fragments and then make you learn those combinations also. Is everyone okay? Do you see that your examiner is going to ask you conceptual things? Yes. So I'm saying if you are prepared with geography, you can very well extract very good marks in geography. बहुत अच्छे मार्क्स आते हैं ज्योग्राफी में, रिकॉर्ड मार्क्स आते हैं. तो ये तो बहुत सारे क्वेश्चन हो गए. से फॉर एग्जांपल फिशिंग बैंक्स कहाँ पे, वेयर आर द फिशिंग बैंक्स ऑफ द वर्ल्ड.
What is the significance of straits? Remember, we're talking about straits and isthmus in the international trade. Troposphere is very significant for atmosphere. Yes. Why all the weather processes are happening over there? Very, very good questions and coming straight from the discussions which will be in the class. But again, saying discussions in the class, not dictations in the class. So, whatever we discuss, if you understand, you will be able to write that. Now, let's come to that second category also, prelims questions. Get that? Prelims question. So, what kind of questions are coming in prelims? So, prelims, we are having questions which are conceptual also and factual also. So conceptual will depend on your conceptual clarity which is given in the class. But the factual are generally map based. Say for example, consider the following countries: Azerbaijan, Kyrgyzstan, Tajikistan, Turkmenistan, Uzbekistan. Which of them have borders with Afghanistan? No matter what books you read, no matter what notes you have, if you've not seen them, can you even try this question? अफगानिस्तान अफगानिस्तान तो पता है, बाकी तो कई नाम भी नहीं सुने. True or not? So my job to take you to the political map, the physical map, their location. Did I give you a sample of this through my homework? 7 tiny little countries, north and south, because such questions come. That is why I'm talking about them. Okay. Consider the following pairs. The river, where does it fall? Where is the mouth of the river? Say, for example, Ganga falls in Bay of Bengal. So, Mekong River, which sea? Thames River, which sea? Volga River, which sea? Zambezi River. So, we should know the oceans also. Did we start with this before entering North America? Have we looked at the water bodies? Do you remember those names? Mexico, Hudson Bay, yes, those bays, Gulf of Mexico, the ocean. So there's a reason why I'm doing that. There's a reason why I'm doing that. It's not just out of thin air that I am choosing to do it that way. Consider the following. Which country borders which sea? Adriatic Sea, Black Sea, Caspian Sea, Mediterranean Sea, Red Sea. So these are the questions that are to be asked. Yes. So this is what we are looking at. Catalonia kahan hai, Crimea kya hai? So a lot of things. Is everyone okay with why we are taking the map approach? We are taking the map approach, keeping the exam in mind. And any of you is thinking that I'm preparing for state PCS, this is state PCS also. State PCS. Ruhr coal field is situated in which of the countries? The coal, which country? So famous ones. Match Pacific Ocean, Arctic Ocean, Indian Ocean, Atlantic Ocean, and trenches in them. Where are their deepest points? Sunda Trench, Puerto Rico Trench, Mariana Trench, Molloy Deep. So these are the things which I am supposed to tell you, which we are supposed to go through them. Which of the following is a landlocked country? Bulgaria, Hungary, Romania, Ukraine. Do you get that? So आपको जो homework दिया था first, again there are people who will miss the classes. Some people came in the first class, some came in the second class, third class. Now these classes are linked. First 2 classes, what did I do? I just created the whole thing that how we would go in this. Now this class tells you why this approach. Now a person doesn't come to the class today. Tomorrow he comes and he says, यार map ही map कर रहे हैं, हम लिखेंगे कब? जबकि question है, it's a very valid thing that for prelims we need this approach. For mains we will need that approach also, where concepts will be there. As a teacher, my job is to mix both of them so that everything reaches you in a proper manner. Please do not miss the classes. Classes are going to be linked and they will be connected. What I teach in North America will be used in South America also. Is everyone with me on this? So that's what we are talking about. So टेस्ट लिया जाए आपका, आपने एक काम करके लाए हो तो ठीक है. सो एटलस क्लोज everyone, online and offline, Atlas close. I want those 7 names, 7 Central American names, countries north to south. जल्दी से लिखो ना, सभी लोग से मैं टेस्ट पूछ रहा हूं. जो लोग होमवर्क करके आए, दे विल बेनिफिट फ्रॉम इट. जो नहीं करके आए वो मुझे जिस जैसे भी देखना चाहते देख सकते. इट्स एब्सोल्युटली ओके. आई आस्क्ड यू टू डू अ होमवर्क. I asked you to arrange countries in Central America from north to south. I'm saying a
large majority of the students will be sitting in the class only to take notes. Number one. Second is, apart from taking notes, they will have a comment also on the teaching style. Whereas the reality lies in answer. तब से तुमने बहुत कमेंट्री कर ली है, हो गया, अब जरा जवाब दो ना. उत्तर से दक्षिण में जमाओ जल्दी से. Quickly, 7 countries. So my classes will become a challenge. They will be a hand-on classes. They will ask you to do a lot of things. Nikhil Sinha has written an answer. Abhishek Jha has written an answer. Viti Kumari. The people who have done the homework, they'll be able to do it. बाकी लोग सिर्फ बात करेंगे. पहला, when we are talking about these Central American countries, we have Belize. Belize, Guatemala, Honduras, do we get that? यार एक संकित कुमार है, इधर इधर संकित कुमार है, इनको परमानेंटली ब्लॉक कर दो. ये लिख रहे हैं नेपाल, नॉर्वे, नाइजीरिया, वो परमानेंटली ब्लॉक करो. आप समझ सकते हैं, एकदम ब्लॉक, सीधा ब्लॉक, कोई टेंशन ही नहीं लेनी. तो देयर आर पीपल जो सोचिए किस तरह से अटेंशन बटोरना चाह रहा है. नेपाल, नाइजीरिया. क्लास के पहले जो भी मादक पदार्थ का सेवन कर रहे हो बंद करो. संकेत, मम्मी पापा अगर सुन रहे हैं आपके, तो मैं उनको भी कहना चाहूंगा, सुबह की डोज ये ले रहा है, इसकी रुकवा दो. ठीक है. बाकी लोग, तो पहला तो आया 7 सेंट्रल अमेरिकन कंट्रीज, जिनके नाम ये हैं. जिन लोगों ने होमवर्क किया अच्छी बात है, बाकी लोग ईमानदारी से लिख लो. इतना घमंड कोई काम नहीं आएगा, ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से करा दो. ठीक है. ये तो आ गए कंट्रीज. व्हाट आर दीज आर द कंट्रीज. उसके बाद इनके कैपिटल्स भी आते हैं. सो व्हाट इज द कैपिटल फॉर पनामा? पनामा सिटी. व्हाट इज द कैपिटल फॉर ग्वाटेमाला? ग्वाटेमाला सिटी. व्हाट इज द कैपिटल फॉर एल सल्वाडोर? सैन सल्वाडोर. What is the capital of Nicaragua? The country's name itself will give you. The country's name itself will give you a clue to what is the capital. ये तो बहुत easy हो जाता. So out of 7, how many capitals do we have to actually remember? Only 3 पे दिमाग लगाना पड़ेगा. B for Belize, B for Belmopan. Yes. Honduras की Tegucigalpa. Costa Rica, San Jose. Everyone, I would want to please, when the class is happening, speak out these names. The more you speak out, the more memory coding it is happening. It's not that Sachin sir is writing, I am noting them down. When I'm asking them, do them. Is everyone with this? तो पहला स्टेप तो ये होना चाहिए, होमवर्क ईमानदारी से होना चाहिए. जब ये हो जाता है तो द स्टूडेंट tries to make formula to remember also. So BIG, big, HEN, याद रहेगा. बड़ी मुर्गी, बिग हेन. अगर 5 हो गए तो नीचे पनामा क्या है वो भी आएगा. थोड़ी देर में विल बी टॉकिंग अबाउट पनामा. यू वोंट फॉरगेट अबाउट पनामा. ठीक है. somebody Amar wrote this is Sen Josh. तो आई कैन अंडरस्टैंड, ये देसी इंटरप्रिटेशन है.
These people are Spanish speaking people, and people who are speaking Spanish, they generally don't use the word J also. So if you ask them, Christmas is around the corner, so who do you worship? They will not say Jesus, they will say Jesus. For them, J doesn't exist. So this they would pronounce as San Jose. For them, this is San Jose. बोला तो सैन होसे जाता है, इंडियन हो तो सैन जोस भी लिख लो. जोश लिख रहे हो तो ये ज्यादा हो गया देसी, इसको हटा दो. ये मेरा जोश बढ़ाए रखो, लेकिन इधर जोश नहीं करना. ठीक है. विल यू रिमेंबर देम? दीज आर इंटरैक्टिव वेज इन द क्लास इटसेल्फ. हम ये काम कर सकते हैं. द मोर यू डू इट ऑन योर ओन, आई कैन मेक योर एक्सरसाइजेज मोर इंटरैक्टिव एंड मोर रिवॉर्डिंग फॉर यू. क्वेश्चन यहाँ पे नहीं रुकता है. क्वेश्चन डजंट स्टॉप हियर. नाउ कम्स द क्वेश्चन, जैसा यूपीएससी पूछता है कि आउट ऑफ दीज 7 कंट्रीज विच वन शेयर्स मैक्सिमम नेबर्स. इस कंट्री के मैक्सिमम नेबर्स हैं. नाउ योर जॉब टू ओपन द एटलस. तो जब भी आपको होमवर्क देते उसको अच्छे से निचोड़ लो, ऊपर नीचे सीधा उल्टा सब करके देखो. ओपन द एटलस. सेंट्रल अमेरिका, हाउ मेनी कंट्रीज, which one has the maximum neighbors out of these 7? इनका वोट आया ग्वाटेमाला. ऑनलाइन स्टूडेंट्स ऑल्सो. विच कंट्री आउट ऑफ दीज 7 हैज मैक्सिमम नेबर्स? और जिनके पास एटलस नहीं है वो कल से आना बंद कर दें, मैं बता रहा हूं. कोई कह रहा है एल सेल्वाडोर. एल सेल्वाडोर के नेबर सेकेंड एंट्री इज एल सेल्वाडोर. जल्दी से देख के बताइए विच वन हैज मैक्सिमम नेबर्स. ग्वाटेमाला. कौन सा मैप खुला होना चाहिए आपका? सेंट्रल अमेरिका मिल रहा है तो ग्वाटेमाला हैज गॉट. किसी ने होंडुरस भी लिखा है, अनुष्का ने. एक बार चेक करिएगा, अनुष्का, श्रेया, प्लीज चेक. पीपल हु आर राइटिंग होंडुरस. ग्वाटेमाला हैज गॉट 4 नेबर्स. ग्वाटेमाला हैज गॉट 4 neighboring countries. What are the neighboring countries? Mexico is there. Yes. Belize, Honduras, El Salvador. Simple question. Simple question is that Guatemala has the maximum neighbor. अभी आपको क्वेश्चन दिखाया फ्रॉम PYQ कि अफगानिस्तान को कौन छूता है. ये क्वेश्चन बनता है. नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लीज पे अटेंशन टू दिस. Guatemala shares borders with which ocean? Atlantic or Pacific? Or both? Or both? बोथ हो गया. इधर भी तो है, इधर भी है. नाउ कम्स द क्वेश्चन. ये तो सिर्फ बताया था. Out of these 7 countries, 5 have border on both the sides. They have water on both the sides. But only 2 countries are different. One has only on Pacific Ocean. Which country? El Salvador is that tiny country which has border only on Pacific Ocean. Similarly, the country which has only on the Atlantic side, Belize. Belize is only on the Atlantic side. Do you see that? So मौका मिलता है, मार्कर लाए हो तो बेलीज को हाईलाइट कर दो और आपके सिर्फ एल सेल्वाडोर को हाईलाइट कर दो, सो दैट यू नो व्हेनेवर यू आर प्रिपेयरिंग. अच्छा, ये दो सेपरेट है. गेट दैट? So I requested you to carry a marker, and my advice would always be carry a yellow marker. जितना येलो रखोगे उतना ईजी है. डार्क कलर्स वो चीजों को हाइड करते हैं. डार्क कलर्स हाइड थिंग्स. Mexico to north and whatever is the answer is. Does everyone get the answer? My intent is to take you, to put you in the shoes of that examination, be it state PCS or UPSC. ये इससे question बनेंगे. Everyone with me on this? Now next to this area which I am talking about, we have the Caribbean islands. Can you see those Caribbean islands also? Yes. So there is this big island called Cuba. Do we have Cuba? Cuba has a capital. What is the capital? Havana. Havana is the capital of Cuba. Havana is popular for cigars. Next after Cuba, which is the next one? Haiti. Okay. So everyone, ये राहुल विश्वकर्मा का थोड़ा सा बड़ा करेंगे, हाँ जी. So everyone, so Rahul Vishwakarma is saying, can you please teach a little bit? I don't know whether slow or fast. It's confusing. Can you teach a little bit? It's confusing.
What are we doing? Everyone from this batch also, Rahul Vishwakarma batch. Everyone, we had given you a homework. We had given you a homework to do 7 countries. Yes. I just wrote them down. I wrote their capitals also. Yes. And I said that 5 of them have coast. 2 don't have coast on both sides. 2 don't have coast. What are these? Look into your map. I didn't even say write. Just identify and highlight. One came as El Salvador and another came as Belize. Everyone, it's been half an hour in the class. Is the class going fast? Everyone, please. Especially so that such students, Rahul Vishwakarma and other students. Now, there are students who are from, I do not know, probably 6th standard. They don't even have atlas. They don't even have atlas. What are they doing is, अंधेरे में ये नाम लिख रहे हैं, नोट्स लिख रहे हैं. Everyone who is atlas from अभी तीनों बैच ऑन कर दो. Everyone is the class speed okay. I really want this thing to be clear right here. Is the class speed fast? 7 countries which were homework, honestly, in the honesty of the teacher has written them down. Then the teacher just said, now that you've looked at it, let us open the atlas. Everyone, so that at least we will be clear by these students not hijacking the class. बहुत गलत हो जाता है ये चीज बनाकर कि आपके पास एटलस है तो अभी कुछ लिखा ही नहीं, आप तो एटलस ही देख रहे हैं ना, सिर्फ एटलस देख रहे हैं. सो दैट दीज पीपल हु आर लुकिंग एट इट, इज द क्लास गोइंग वेरी फास्ट? इस क्लास में अभी तक हुआ क्या है? और जो लोग, आपने पहले दिन भी किसी ने कहा ना कि हमें क्या करना है, हमें नोट्स बनाने ताकि लास्ट में रिवाइज करेंगे. भाई आंखें तो खोलेगा यार, एटलस तो खोलेगा. It's very easy to create such things in the class and your teacher reads the chat. भाई आपके सामने एटलस है, लिस्ट आपके सामने बनाई, so that none of you is left behind. I am writing it first. I will be writing first, but not everything is to be written. Not everything is to be written. तो क्लास रोक दी है सभी लोगों के लिए यहां पर है. People who are sitting without atlas, I have a request. Do something else. If you don't believe in the subject, if you don't think आपको यहाँ पर कुछ मिलने वाला है, save your time. Seriously save your time. आपको भी दिखाया कि एग्जाम में क्या आएगा, मैचिंग ही तो आएगा, पहचान कौन आएगा ना. सो पहचान के लिए आई एम टेकिंग यू थ्रू दैट, आई एम जस्ट टेकिंग यू थ्रू दैट, दैट्स ऑल. तो आई एम वेरी क्लियर ऑन दिस दैट इफ एनी स्टूडेंट वांट्स टू प्ले दिस वाला गेम कि अरे तेज चल रहा है, धीरे चल रहा है, रोक दिया भाई. सबके साथ पढ़ लो, पूछ लो कहीं कुछ चल रहा है, ये पढ़ा है अभी तक, आधा घंटा हो गया, कोर्स भी खत्म करना है. एंड ट्रस्ट मी, ऑल ऑफ यू हैव बाइसिकल चलाया कभी? बाइसिकल कब गिरती है? जब बहुत ज्यादा स्लो होती है या ठीक स्पीड पर होती है? एक ठीक स्पीड पे क्लास चलने दो यार, एक ठीक स्पीड पे क्लास चलने दो. द बिगेस्ट मिस्टेक विच अ लर्नर डज इन बाइसिकल इज वो बहुत धीरे धीरे चला रहा होता है, बैलेंस बनाते बनाते गिर जाता है. ट्रस्ट मी, इफ यू डोंट ट्रस्ट मी, आपके पास एटलस है नहीं, सर बहुत तेज जा रहा है, मैं लिख नहीं पा रहा हूं. भाई लिखने के लिए तो आई ही नहीं, ये तो हमने कहा था, ये तो घर से करना है. आई एम नॉट टेकिंग अवे माई एफर्ट, मैं आपको क्लास में कराऊंगा, आप करके आयो. एक और लेवल आपको बताया क्वेश्चन कैसे बनेगा. So that's what we are talking about. I'm really not happy with this. भाई ये क्या कर रहे हैं आप लोग? आप ही की क्लास है, इसे हाईजैक करेंगे. तो ये सारे चैट्स प्लीज डाउन कर दीजिए. और मेरा आपसे हाथ जोड़ के वो फिर आता है ना, हम्बली रिक्वेस्ट यू क्लास 3 o'clock सही स्टार्ट कर देना. ये वही हम्बली है यार. क्लास को टाइम से पहले आया, यहीं पर बैठा हूँ, क्लास को रोक के बैठा, तेज चल रहा हो मास्टर जी. फिल्म थोड़ी चल रही है यार. एंड if I am going fast, again, don't come to the live class. Take the recording, make it 0.25x. 0.25x. Please. कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो. मैंने कल भी बताया, आपके हाथ में, जितने भी लोगों को पर्सनल प्रॉब्लम हो सकता है कि नहीं हो सकता, इट कैन बी देयर यार. ये तो बहुत सही रहता है, रिकॉर्डिंग रहती, कर लो. आगे नहीं करना यार, ये बहुत खेल हो गया. लेट्स कम बैक टू दिस. सो कैन आई एक्सपेक्ट माय स्टूडेंट्स टू शो मी सम कैलिबर? कैन आई एक्सपेक्ट यू गाइस टू शो मी सम कैलिबर? यूपीएससी पास करना भीख में तो नहीं मिलेगा ना, तो थोड़ा तो जोश होना चाहिए कि नहीं, थोड़ा दम होना चाहिए. जो ये भी नहीं लिख पाया तो वो क्या कर रहा है, या तो इसको कोई ग्रेजुएशन करनी है,
या इसको कल को टीचर बनना है, यही नोट्स यूज करना है। मुझे यहाँ पर वो लोग चाहिए हु आर लुकिंग टुवर्ड्स मेकिंग देयर फ्यूचर व्हाट दे वांट टू। इतना तो कॉन्फिडेंस रख लो यार। तो जो स्क्रीन पे लिखा है उसमें अब ड्रामा नहीं करेंगे। एटलस आपके पास नहीं है तो अभी क्लास को रोकिए। जो यहाँ पर भी अगर नहीं है यू कैन लीव। सीरियसली बताऊं, यू कमिंग टू द क्लास विदाउट द टूल्स, आई टोल्ड यू इट इज अ वर्कबुक विच आई विल बी डूइंग दैट। जो लोग बचा के रखे हैं मैं नहीं लाता हूँ, बिल्कुल ठीक है। आई एम सेइंग सेव योर टाइम, सेव योर टाइम। वापस आ जाए। एंड आई एम गोइंग टू इंक्रीज द स्पीड। भाई मैं तो खुद परेशान हूं, कुछ नहीं किया, आप खुद बताइए। गोइंग बैक होम व्हाट विल यू कैरी यार? इसलिए आए थे 2 घंटे देने के लिए, ये तो बहुत स्लो हो जाएगा भाई। ठीक है। सो कुछ अभी हमें समझ में आया कौन सा किस तरफ है। डिड यू मेमोराइज इट? नो, यू नॉट मेमोराइज। वो आप क्लास के बाद भी पढ़ोगे ना, क्लास के बाद भी तो पढ़ना है कि नहीं पढ़ना है? वो भी नहीं पढ़ेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। सो नाउ वी वर लुकिंग एट आइलैंड्स। व्हाट आर आर आइलैंड्स? व्हाट आर आर आइलैंड्स? क्यूबा दिखा? क्यूबा के बाद नेक्स्ट आइलैंड। तो जो लोग हैती बोल रहे हो गलत आंसर है, जल्दी से। जमाइका भी यार। आइलैंड, नेक्स्ट बिग आइलैंड आफ्टर क्यूबा। आइलैंड का नाम बताओ। हाइती तो कंट्री है, डोमिनिकन रिपब्लिक तो कंट्री है। देयर इज एन आइलैंड जिस पर 2 कंट्रीज हैं, उस आइलैंड का नाम बताओ। हाइती और डोमिनिकन रिपब्लिक, आइलैंड का नाम कैसे पता चलेगा? अरे चचा, उस आइलैंड को देखो जिसमें वो लिखा है, ये देखो। अभी पढ़ा नहीं रहे हैं और एक और बोलेगा बहुत तेज चल रहे हैं। भाई ये आइलैंड है आपका, 1, 2, 3 आइलैंड है, बना के दिखा रहा हूं। इस पर क्यूबा लिखा है, इस पर लिखा है हाइती, इस पर लिखा है डोमिनिकन रिपब्लिक। ओनली क्वेश्चन इज कि भाई इस आइलैंड का नाम बताओ, क्यूबा। पूछा इस आइलैंड का नाम बताओ, कह रहा हाइती डोमिनिकन रिपब्लिक। मैंने कहा तो कंट्री है, नाम बताओ। अच्छा सर फिर बहामा होगा, फिर जो दिख रहा है वो होगा, और उसके बाद बोलेगा तेज चल रहा है। एक तो अपना काम नहीं कर रहा। काम क्या करना है आपको? यू हैव टू शो सम ग्रेट। इसके आसपास इस आइलैंड का नाम कहीं लिखा होगा, ये काम करना है। ये काम करेगा नहीं सर, तेज चल रहे हो। एटलस देखना सीखो, कल से बता रहे। क्या नाम है? सभी लोग, जो आपका एटलस है, एटलस है। अब मतलब क्लास को बिल्कुल वो कर दो। क्लास सेकेंड क्लास के स्टूडेंट्स मेरे पास आए हुए हैं। इट्स अ वेरी शेमफुल थिंग। यस, सो एवरीवन, पहले दिन बताया फिजिकल मैप होता है, एक पॉलिटिकल मैप होता है। यहां बैठे क्लास 6, ऑनलाइन ही नहीं ऑफलाइन में भी ऐसे ही। अब दिक्कत ये, एक आइलैंड पे 2 नाम लिखे आ रहे हैं, कंट्री के नाम, कंट्री 1 कंट्री 2। अब आइलैंड का नाम पूछ रहे हैं। अबे आइलैंड का नाम फिजिकल में चले जाओ, फिजिकल में चले जाओ। क्या नाम लिखा है? हिस्पैनियोला। सर बहुत तेज पढ़ा दिया सर, मेरा दिल की धड़कन बढ़ गई। अबे गर्लफ्रेंड थोड़ी हूं बे, एटलस है। एटलस देखकर भाई साहब, सर बहुत तेज जा रहे हैं। अभी तो सिर्फ पहचान कौन हो रहा है, एटलस खोलना सिखा रहा हूं, उसमें भी एक को तेज जा रहा है। और कुछ बोल दो इनको तो पलट के, मास्टर गुस्सा हो रहा था। मास्टर गुस्सा नहीं हो रहा, आपकी क्लास रुक गई है। डू यू रियलाइज द क्लास हैज स्टॉप्ड बिकॉज यू रिफ्यूज टू लुक इनटू द एटलस। फिजिकल सर, अब दूसरा मैप कौन देखे? पॉलिटिकल में देश आते हैं, फिजिकल में नेचुरल थिंग्स आते हैं। डिड वी फाइंड दैट? और सबसे सही तो वो थे। अगर ये नहीं मिल रहा तो ये वाला बता दे, बहामास। सर ये वाले पे लिखा है क्या लिखा हुआ था? जमैका। डरपोक कितने हैं कि जो मिल रहा है वो कर दें। भाई रियलिटी तो ये है। इज इट एवरीवन ओके? आर यू ओके विद दिस रियलिटी और यू वांट टू चेंज इट? चेंज में तो कुछ लगेगा यार, चेंज में तो कुछ लगेगा। सो आई एम इनवाइटिंग यू। सो हिस्पैनियोला भी मिला, 2 आइलैंड मिल गए, 2 आइलैंड मिल गए। थर्ड आइलैंड कौन सा है? सेंजुआन है? पुर्तो रिको लिखा होगा यार।
अरे बड़े वाला टुकड़ा यार, बिग आइलैंड। मतलब तुम लोगों ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। मतलब मुझे कोई रीजन नहीं लगता है कि मैं बिलीव कर सकूं कि मैं 12th क्लास बच्चों से बात कर रहा हूं। उनको बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो रही है ये आइलैंड ढूंढने में, क्यूबा, ये आइलैंड ढूंढने में, और उसके बाद इतना बड़ा पोर्तो रिको लिखा हुआ है, कह रहा सर डोमिनिका, बारबाडोस, ग्रेनेडा। भाई बड़े बड़े टुकड़े नहीं दे रहे क्या? है वहां पर लिखा है पोर्तो रिको। सर बहुत तेज आयो सर, मैं मर चुका हूं सर। अच्छा है वैसे भी, यहाँ पे थोड़ा सा तड़पा लूंगा, एग्जाम में तो वैसे ही खत्म है फिर। बड़ा आया, 1 क्यूबा, 2 हिस्पैनियोला, 3 पोर्तो रिको, और 4th इज जमाइका। 4th इज जमाइका। मिले या नहीं मिले? यस। अब ध्यान दो, कल वो स्टूडेंट ने पूछा था, आज तो आई नहीं है, कि सर ये 4 ही आइलैंड क्यों लिखे हैं, सबसे बड़े थे भाई, कॉमन सेंस है। ये आपको मैं बता दूं, देर आर 7,000 आइलैंड्स। हाउ मेनी आर दीज? 7,000 आइलैंड्स। 7,000, जो यहाँ पर बैठे हुए हैं आधे को तो डर लग रहा होगा, 7,000 कैसे याद करेंगे। समझदार लोगों ने इनकी ग्रुपिंग की है, गेट दैट? तो साइकोलॉजिकली our mind can take only 7 inputs at a time. How many? 7. If you put the 8th one, the first one will be deleted. ठीक है? तो 7,000 नहीं दे सकते। इन्होंने क्या किया? These bigger ones are called greater Antilles. What do we call them? Greater Antilles. Antilles means islands. और ये जो छुटकू वाले हैं इनको कहा जाता है लेसर एंटिलीज और एंटाइल्स। लिखा है कहीं पर? ग्रेटर एंड लेसर पता चला, फिजिकल में लिखा होगा, अगर पॉलिटिकल में नहीं लिखा है तो। इज ग्रेटर एंड लेसर रिटन समवेयर और नॉट? मिल गया? हाईलाइट कर दो। वो भी नहीं लाया होगा मार्कर, सर 20 रुपया लग जाएगा, सर बहुत तेज जा रहे हैं। ये इनके नोट्स नहीं बनाने ना, वो जो स्लो वाला वो इसके भी नोट्स बना रहा है। अब सर डिक्टेट करेंगे, ग्रेटर ये होता है, लेसर ये होता है। तो एवरीवन हैव यू हाईलाइटेड? सो ग्रेटर एंटिलीज कौन से 4 हैं? व्हाट आर द 4 वंस? क्यूबा, हिस्पैनियोला, पोर्टो रिको एंड जमाइका। ओके, पे अटेंशन। नाउ योर टास्क बिगिंस। अभी कुछ लिखने वाला नहीं, पहला तो ये देखने वाला है ना, पहला तो देखने वाला है। कैपिटल ऑफ क्यूबा, हवाना। कैपिटल ऑफ हाइती, पोर्ट आओ प्रिंस। स्पीक इट अप, स्पीक इट अप। जिनके पास एटलस, पोर्ट आओ प्रिंस। तुम्हारे पास एटलस है? तुम्हारे पास एटलस है तो बोलो, जो भी है बोलो, उसको पोर्ट आओ प्रिंस बोल लेगा, अच्छा रहेगा, तेरे लिए हेल्प हो जाएगी, विश्वास करो। ऐसे कोई डोमिनिकन रिपब्लिक, सेंट डोमिंगो। डी से डोमिनिकन, डी से डोमिंगो। फाइंड आउट वेज टू मेमोराइज इन द क्लास इटसेल्फ। यस, उसेन बोल्ट द फास्टेस्ट रनर कम्स फ्रॉम जमाइका। जमाइका की कैपिटल किंगस्टन, किंगस्टन। तो 4 हो गए। व्हाट आर दीज 4 कॉल्ड एज? ग्रेटर एंटिलीज। बाकी सब क्या है? छोटू। छोटू मेरा कई बार यहाँ पे जाना हुआ, मुझे खुद कभी याद नहीं होता, बट इन छोटूज में द लास्ट वन विच इज वेरी क्लोज टू साउथ अमेरिका इज दिस स्क्वायर। इसका नाम है ट्रिनिदाद टोबैगो। डू यू गेट दैट? एकदम आखिर में सभी लोग यहां पर देखेंगे स्क्रीन पर, ट्रिनिदाद टोबैगो, ट्रिनिदाद एंड टोबैगो। मिल गया? यस। एकदम नीचे जाना है लेसर एंटिलीज में, पहले स्क्रीन पे देख लीजिए। कुछ लोग किताब में आग लगा देते हैं, स्क्रीन पे देख लो, लाइफ इजी हो जाएगी। स्क्रीन पे मार्क करके रखता हूं, ये ग्रेटर एंटिलीज। मेरा नहीं मिल रहा है, पहले यहां देख फिर उधर देख। मिला? सबसे नीचे ट्रिनिदाद टोबैगो लिखा होगा, जहां पे साउथ अमेरिका शुरू हो जाता है। दिस इज साउथ अमेरिका। डिड यू फाइंड ट्रिनिदाद टोबैगो? ट्रिनिदाद या कुछ लिखा है, नहीं लिखा है? पॉलिटिकल में भी नहीं है। चलिए, तो तो इसके बाद साउथ अमेरिका का मैप खोल लो। नॉर्थ अमेरिका के बाद क्या आएगा?
एक मिनट इसी में चलो यार बेटा, भागने लगते हो। एक तो इतना डर है लोगों में। बेटा एक पेज आगे चलो, एक पेज नॉर्थ अमेरिका का, एक पेज, एक और पेज आगे चलो, प्लीज रुक जाओ। आपको पता है इतना एक्सपेंडेड लैटिन अमेरिका दिया हुआ है, घुमा के देखो पेज नंबर 91। शेम ऑन द क्लास यार, पेज नंबर 91 खोलो बेटा, आगे जा रही हो 91 पे रुक जाओ, 91 पे रुक जाओ। पेज जो आपका है नॉर्थ अमेरिका, उसी में नॉर्थ अमेरिका में पीछे आया था आपका, एक पेज आगे चलो, एक और पेज आगे चलो। ये लुक एट द हैंडीकैप ऑफ द टीचर, लुक एट द हैंडीकैप ऑफ द टीचर कि ये इतना बड़ा फुल पेज का वो है, सारे के सारे दिए हुए हैं, बट हम क्यों, हमें डर लगता है दो पेज आगे नहीं जाते, दो पेज पीछे नहीं जाते। So if you want, I have an option. I have an option. I can behave like a history teacher. वो जो पहले दिन था ना नोट्स लिखवाना, मैं सारे नोट्स लिखवा देता हूँ। हम मैप देखेंगे ही नहीं, बहुत सही रहेगा, धीरे धीरे लिखवाऊंगा। सारे चैट्स ऑन करो, बंद करते हैं मैप्स, लेट्स राइट डाउन। सबके सब सारे चैट्स ऑन करो, लेट्स राइट डाउन। पीपल नॉट इवन कैरिंग एटलस, और एटलस में विश्वास ही नहीं। मेरे लिए सबसे आसान, 20 साल से जो रटा है उसको एक ही साथ करते हैं। ठीक है, चलो लिखना शुरू करेंगे। नॉर्थ अमेरिका, बंद करो एटलस, खत्म खत्म। हाँ हाँ, क्या नौटंकी क्या यार, वो कह रहा है तेज कर रहा है, धीरे कर रहा है, लेट्स डू दैट। दोनों में लिखा है हमें एटलस ही नहीं खोलनी है, और बाकी लोग वो एटलस लेके आए, उसको बोला सेना पोर्ट ऑफ प्रिंस, बोले क्यों बोलूंगा मैं, क्यों बोलना है, लेट्स हैव दिस, बड़े मजे से आएगा। लेट अस सी कैसे ज्योग्राफी आती। आप ही के तरीके से पढ़ाएंगे, मेरे तरीके से तो आपने लिख दिया तेज जा रहे हो, धीरे जा रहे हो, सब जा रहे हो। सारे चैट्स डाउन, सब लोग यहाँ पे लिखेंगे नॉर्थ अमेरिका। लेट्स गो फॉर नॉर्थ अमेरिका फिजिकल ज्योग्राफी क्विकली, एकदम डाउन। थोड़ा आपको भी पता चलना चाहिए, अगर आपको अपने डिमांड से करना है, अपने डिमांड से कर लो। आप ही लोगों को अपने टाइम से क्लास चाहिए, सब कुछ चाहिए, हमें रिजल्ट चाहिए, वो मेरा मास्टर स्ट्रोक ले आएगा। मास्टर स्ट्रोक में आई गेट सच स्टूडेंट्स हु आर क्रेविंग फॉर दैट, वो आ जाएगा। नॉर्थ अमेरिका, प्लीज राइट डाउन, नॉर्थ अमेरिका फिजिकल ज्योग्राफी, नॉर्थ अमेरिका फिजिकल ज्योग्राफी। बेकार में रोज टीचर का खेल करेंगे कि पहले मेरे नोट्स होने चाहिए, फिर इनका क्या स्टाइल है, डांटेगा, हंसाएगा, पढ़ाएगा, लिखाएगा, लिखाएगा। नॉर्थ अमेरिका जल्दी से सभी लोग, बेटा सब लोग को जैसे है वैसे ही पढ़ाएंगे, लीव इट टू मी। आप एक बात बताओ, आपके सामने एटलस खुली नहीं रही है, आप अगर मेरी जगह पर हो और आप किसी को बोलें कि यार उसमें ट्रिनिदाद टबेगो ढूंढ ले, एटलस सामने, वो खोलेगा ही नहीं, लेसर और ग्रेटर खोलेगा ही नहीं, आपका और मेरा कम्युनिकेशन ही नहीं। एवरीवन गेट दिस, who controls the class, learning in the class is controlled, who will be controlling the class, इस क्लास में जो लर्निंग होगी, who controls the class, no, that's the biggest thing, the teacher does not control the class। इस क्लास से whatever you take is not a function of me, it's a function of you। I've been teaching for 20 years, I know the fastest way to learn geography, but if you are not enrolled into it, will you take anything? There is an ocean. Ocean has the largest amount of water on the planet. You reach the ocean coast with a bucket. How much water can you take? Only the bucket? Yes or no? Will the ocean decide the water or you decide the water? You decide the water. So I'm asking you to have your atlas and find them, locate them. नहीं locate करेगा, मैं बोलता रहूंगा, मैं कहूंगा यहाँ नहीं वहां नहीं, और इसी क्लास में मुझे नहीं मिला, मुझे नहीं मिला। आई एम टू सेइंग यू कैन वेरी वेल रीच आउट टू योर नेबर ऑल्सो, रीच आउट टू नेबर। इट्स नॉट दैट somebody has put it on the chat, आई एम लुकिंग एट इट, पीपल आर हेल्पलेस। एक होमवर्क दिया था कि यार इसको करके आएंगे, होमवर्क भी हम नहीं कर रहे। सर स्कूल थोड़ी है, स्कूल की तरह थोड़ी होता है, अब हम बड़े हो गए, तो यार वो भी दिखा दो। आई विल बी सो हैप्पी टू सी दैट यू ग्रोन अप। If in an open book you cannot locate a country, and if you're asked to speak out the name of a country, you can't speak it up, how do I trust that you are grown up?
तो लेट मी गिव इट योर वे, बिकॉज एटलीस्ट कुछ तो होगा। एक कोचिंग लिया है, सब पैसा दिया था, कुछ तो लेकर गए। दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी। आए तो आप रिजल्ट्स के लिए थे। प्लीज राइट डाउन नॉर्थ अमेरिका फिजिकल ज्योग्राफी, नॉट इंटरेस्टेड इन द एटलस। इफ आई एम इंटरेस्टेड इन द एटलस, द ओनस लाइज ऑन यू। एटलस प्लीज लेकर भी आएंगे और देख कर भी आएंगे। ना मार्कर है किसी के पास, कोई पेन ला रहा है, कोई नहीं ला रहा है, करना है, देखना है, कौन खोलेगा, दैट्स अप टू यू यार। Honestly, I showed you all the pages of Atlas. I said India comes first, the world comes in the middle, and continents come in the middle, and this thing. देखेंगे ही नहीं क्लास टू क्लास। भाई वो बाकी टीचर्स की वो स्टाइल होगा। मेरा तो आई डू एक्सपेक्ट कि आप उसे पढ़कर आएंगे, और अगर आप नहीं पढ़ रहे हैं और आप एटलस भी नहीं देख पा रहे मेरे सामने, सो लेट मी ऑल्सो स्विच ओवर टू द कंफर्ट जोन। I am very sure that every year I sleep very happy with the results, and I know which students will get results. वो आएंगे मेरे पास। मास्टर स्ट्रोक बहुत रहता है, मुझे बंद करना पड़ता है। आई एम वेरी हैप्पी विद इट। सो माई रिजल्ट, द थर्स्ट फॉर being able to contribute to the selections, that will be quenched. Maybe you are not interested in that. It's absolutely okay. So please write down North America. Everyone, North America physical geography. North America physical geography. We'll write about we'll write about first lithosphere. नॉर्थ अमेरिका फिजिकल ज्योग्राफी लिथोस्फियर। एंड इसमें भी अगर किसी को फास्ट स्लो हो, बता दिया 0.5x, 0.75x, 1.25x, विच एवर वे यू वांट टू डू, प्लीज डू दैट। लेट अस नॉट मेक इट अ टिफ बिटवीन द टीचर एंड द स्टूडेंट्स, बिकॉज देयर यू डू नॉट respect anything when it comes to the chat. So let me say my grace also. So lithosphere, please write down the topography of North America. The topography of North America is highly diverse. The topography of North America is highly diverse. The western side, the western side is having the mountainous young fold mountains, while the eastern side, is characterized by the old denuded, characterized by the old denuded। ऐसे मत देखो, अंग्रेजी में लिखो denuded। जब तुमको कहा कि भैया जमाइका की राजधानी बोल दो, तब तो कुछ नहीं, अब अंग्रेजी का denuded में प्रॉब्लम है। denuded, DENUDED मिला। जिसको भी अब कोई दिक्कत होगी, स्पेलिंग भी बताएंगे, बच्चों की तरह करना, खेला करो, कोई टेंशन नहीं। denuded माउंटेन्स, इनको दिक्कत थी जमाइका बोलने में, अब denuded में आए हैं, denuded रखते हैं। denuded माउंटेन्स आगे लिखेंगे। In between lies the middle plains of North America. The northern part of North America is geologically, the northern part of North America is geologically the oldest part called the Canadian, oldest part called the Canadian Shield. SHIELD, Canadian Shield. Further north, glaciation has led to the creation of numerous island groups.
groups with big islands like Greenland, big islands like Greenland, Baffin Island, Greenland, Baffin Island, and Queen Elizabeth Islands, and Queen Elizabeth Islands standing out. Queen Elizabeth Islands standing out. Get that? अभी होगा सिर्फ लिखवा रहे समझा नहीं रहे वो भी पूरा करता हूँ. Western side mountains, eastern side mountains. These are higher, these are lower. In between plains. Oldest part is Shield. ऊपर क्या है? बहुत सारे islands हैं. Greenland Island, Baffin Island, Queen Elizabeth Island. Let's come to the southern part. The southern tropical part. The southern tropical part. The southern tropical part is where the continent becomes narrow. Continent becomes narrow. And inlets of the ocean and inlets of the ocean in the form of Gulf of California, in the form of Gulf of California, Gulf of Mexico, and Caribbean Sea can be seen. Gulf of Mexico and Caribbean Sea can be seen. This narrow part is called the Central American region. This narrow part is called the Central American region, which is actually or which is geographically an isthmus, ISTHUMUS, isthmus, full stop. In bracket you can write down what is an isthmus. So, a narrow stretch of land. What is isthmus? A narrow stretch of land connecting two land masses or dividing two water bodies. Bracket close. This famous isthmus has the Panama Canal, which was built around 1914, and acts as an important navigable canal
acts as an important navigable canal for ship transport between Atlantic and Pacific Ocean. Ship transport between Atlantic and Pacific Ocean. Get that? Please write down further. Central America, apart from Central America, apart from the countries in the apart from the countries in the isthmus also includes countries in the isthmus also includes the famous Caribbean islands. The famous Caribbean islands. Which the famous Caribbean islands, which are a result of the plate subduction, which are a result of the plate subduction of Caribbean plate under the North American plate. Under the North American plate. This has created an island group in the shape of an arc. An island group in the shape of an arc. Arc of a circle, arc की shape में है. Arc in the shape of an arc. Having nearly 7,000 islands. Having nearly 7,000 islands. These 7,000 islands have been grouped into Greater and Lesser Antilles. Have been grouped into the 7,000 islands have been grouped into Greater and Lesser Antilles. See that? So that's one thing about the whole structure. Now, this is what the islands are. This is Gulf of Mexico. This is your Cuba, Hispaniola. These are the Lesser Antilles. This is what we have. Here is the Isthmus of Panama. Here is the Isthmus of Panama. And in the Isthmus, we have, what do we have? We have a man-made canal. And what is that canal called as? Panama Canal. The Panama Canal. This is the Panama Canal. This has been created to connect East Coast with West Coast, Atlantic with Pacific. Ships taking this route can reach from New York to Los Angeles in 13 days less than this longer route. This longer route where you have to go all around South America and then come to this. This has been saved by creating a man-made canal which is called Panama Canal. So how does this canal look?
So this is a ship going in the canal. Photo of a ship going in the canal. It's like this. एक शिप इधर आ रहा है, एक शिप इधर जा रहा है. तो आप दोनों oceans के बीच में. These are the gate systems in which they would be doing that. Why would a country like Panama allow that? Because Panama will get revenue from that. And just like we have toll gates, if Panama allows the ships to use its territory, Panama will be getting revenue from that. So that is there. If the ship has to travel all these places and then it is going into Pacific Ocean, the ship might want some repairs also. So those technicians will be connected by Panama. Ship is going on a long journey, it will require some rations also, those supplies also. So on everything, Panama will make the money. So this is what Panama Canal was thought of. It is here that we have a 50-kilometer long canal from Pacific to Atlantic Ocean. That is what this canal is about. It is in your atlas also. When you get a chance, please have a look at that also. What is the current affairs of it? Current affairs of it is that because of climate change, last year 2024, there wasn't sufficient water in this canal. When there is not sufficient water, how will the ships pass? Because of that, it became a very big challenge. It was in news that because of climate change, canal does not have sufficient water for ships to pass. Is everyone okay with this? Let's go further into North America. We will go one by one. So we are talking about the mountains of North America. We are doing lithosphere and we are doing mountains of North America. Mountain ranges and peaks of North America. And let me attach to this key mountain ranges, the important ones. We'll be sticking ourselves to that. Okay. Now, when I start talking about mountain ranges, I need to give my students some concept about what are mountains. What are mountains? So, mountains are highlands with sloping boundary and a pointed peak on top. Mountains are highlands, a highland with sloping boundaries or sloping sides and a pointed peak on top. And a pointed peak on top. Everyone with me on this? Now we come to the word highland. What is highland? So for highland and lowland, I would want to make a diagram. This side is ocean. This side is land. Get that? This is a three-dimensional diagram. If you feel like drawing, you can draw. If you are just into writing, please feel free. जैसा आपको चाहिए वैसा ही मिलेगा. Drawing बेवकूफ लोग बनाते हैं. It's absolutely okay. We have the level of the sea is called MSL. MSL is mean sea level. तो जो sea का जो level होता है, that is called mean sea level. So when we go to a hill station and we are told that you are at a height of 6,000 feet, what does it mean? 6,000 feet from where? All heights and all
notes in the world are measured from mean sea level. So, mean sea level is the reference line. For people who love notes and dictations, उनके लिए please write down mean sea level is the reference line above and below which all heights and depths are measured. Slow and fast, I do not know. I wrote it. I think you will be also be able to do that. Plain depression. I have lowlands. What are lowlands? Lowlands are land areas at or near at or near sea level. What are the examples? Plains and depressions. Any land which is close to sea level, any land which is close to sea level is called lowland. Generally plains are closer to sea level. Generally depressions are closer to sea level. What will happen in a depression? The water will come and fill it up. What will it become? It will become a lake. So lakes are created in depressions. But we have areas which are uplands or highlands also. Plateau and mountain. What are these? These are highland. So what is the difference between lowland and highland? Lowland are close to the sea level. Highlands are much above sea level. What is the difference between plateau and mountain? Mountain is a pointed top highland. Mountain is a pointed top highland. The peak of the mountain, one or two peak of the mountain, they are generally topography is like that. That's there. And what is plateau? Flat topped highland. So when I told you that I'll be studying the mountains of North America, I'm dealing with highlands first. So I'll be looking at mountains and then I'll be looking at plateaus, then I'll be looking at plains. Is everyone okay with that? Mountain ranges and peaks of North America. So first I use the word mountains. I've told you what is a mountain. What is a mountain? Now let me tell you how mountains are created. Great आ गया था कोई बात नहीं. Mountains, how they are created. वरना बोलेगा कॉन्सेप्ट नहीं बताया, तो कॉन्सेप्ट पहले बता रहा हूं. नोट्स एक जगह पर होगा, लास्ट डे पर रिवाइज करेंगे. Mountains, how they are created. More than 90% of world's mountains are
fold mountains. When we are talking about mountains, how they are created, so the first thing that comes to us is that fold mountain is a very big category. 90% of them are fold mountain. Less than 10% of world's mountains are block plus volcanic plus residual or relict mountains. Block mountain, volcanic mountain, relict or residual mountain. So how many types of mountains do we have in the world? 1, 2, 3, 4. 4 types of mountains are there in the world. This is theory coming for you. Let's look at fold mountains. Please write down Earth's lithosphere. Earth's lithosphere in bracket, which is the rigid rocky upper layer, is a discontinuous layer. Earth's lithosphere, which is the rigid rocky upper layer, is a discontinuous layer broken into fragments called lithospheric plates. Broken into fragments called lithospheric plates. So this is Earth's surface. The outer surface is a lithosphere, and lithosphere is not continuous. It is broken into fragments. And what are these fragments called as? Plates. Whatever I have said, I have drawn also. Plates keep on moving when two plates converge. When two plates converge, fold mountains and associated, when two plates converge, fold mountains and associated events happen. Events are created. So fold mountains, how are they created? They are created by plates. When two plates they come together, that's how fold mountains are created. These are called plate convergences. Get that? How this is happening, this we will look at in the next page, so that your notes are complete. We go to the next sheet. All this will be given to you in record also. Next is plate convergence. Plate convergence. So lithosphere is made up of plates. Plate 1, plate 2. Everyone, is the diagram clear?
Two plates, they are converging. And plates are resting on what? The internal layer of earth. Have you heard of something called as mantle? और ये क्या है? These are crystal plates. This diagram which I made here, I am showing this diagram in detail now. Two plates are coming together and this process is called convergence. This process is called convergence. दो प्लेट आपस में आ रही, ठीक है? Now there is ocean on top of this plate. What is this? एक ऐसी प्लेट हुई, bottom of the ocean, that plate is called oceanic plate. Plate that lies at the bottom of the ocean is called as oceanic plate. Now when these two plates are pushing against each other, one of the plate which is heavier will have a tendency to go down. Imagine a truck is coming, in front of that probably a tiny little car is there. What will happen when they collide? The truck will go on top of that car, yes or no? But that's a road. But here what is happening is mantle is semi-plastic molten, so this can go inside. What will happen is our plate 1 will go inside. Okay, this process of going inside is called subduction into which layer? Mantle. There is no other way. उसको नीचे जाना है तो जाना ही पड़ेगा, जैसे कचरे के ढेर को दिल्ली से जाना है. Plate 1 getting subducted. What happens to plate number 2? Plate number 2 will stay like that, maybe because of the pressure it bends. Yes, this bending is called, remember we were talking about fold mountains? This bending is called folding. When two plates come, they collide with each other, one plate bends, that is called folding. That is called folding. दो प्लेटें आपस में टकरा रही, folding. अब ये जो नीचे जा रही है, the plate which is going inside the mantle, now mantle is very hot. Mantle is very hot. So what will happen? This plate will melt. This plate will melt. ये हमारा mantle है. So the plate went into the mantle and it melted. Do we get that? Now thing is, this plate is lighter in weight. This plate is lighter in weight. When it melts, its melted rocks, we call that magma, will be lighter than this. So if there are two fluids, one is lighter, other is heavier, just like oil and water. If we mix them, what will happen to the oil? It will come up on the surface. This lighter one will have a tendency to come up on the surface. What is it? It is molten rocks and it might create a volcano. Will we see this small volcano? Will we see these volcanoes? No, they are submarine volcanoes. What do you mean by submarine, sir? Submarine is an English word. Submarine means underwater. Yesterday, a student sitting here, she asked me when I left, so what do you mean by shallow sea? I don't know which class I am teaching. Sir, shallow sea का क्या मतलब होता है? बेटिया shallow मतलब कम पानी, कम गहरा सागर, deep sea and shallow sea. So I am teaching that audience also. So I must understand as a teacher that you are not teaching an audience which is looking at this. They are looking for word meanings. Shallow sea, deep sea. तो इस बेंडिंग को जो लोग नहीं समझे, सर फोल्ड नहीं समझ में आया, ये जो बेंड हो जाता है उसको फोल्ड कहते हैं. चादर, बेड की चादर पे कभी कभी सिलवट आती है, दैट्स कॉल्ड अ फोल्ड.
आपकी शर्ट पे रिंकल आता है उसे फोल्ड कहते हैं. तो इन द इंग्लिश वट एवर यू अंडरस्टैंड दैट्स दैट. एवरीवन अंडरस्टैंड्स फोल्डिंग. अब ये क्या हुआ? ओशन ओशन प्लेट आपस में कन्वर्ज हो. There is another possibility that ocean plate and continental plate, they are converging. This is ocean plate. This is, what is the difference between ocean and continental plate? Ocean plate is thinner, continental plate is thicker and above sea level. That is why you are on land. If you are below sea level, तो वो दब जाएगा. And continental plate is always light. So if this is light and they collide, which one will go down? Heavier or the lighter one? Heavier. Heavier. सोच के देखो, lighter कह रहे हो. Density. कोई भी चीज जो भारी होगी वही नीचे जाएगा ना. तो जो भारी है ये heavy होती है. Heavy will go down. When this goes down, what will happen? ये melt करेगा. और इसके साथ क्या होगा? ये bend करेगी. अगर ये bend की like this, so what will this be called as? Mountain. वर्ल्ड के कितने परसेंट? 90% आर इन फुल मार्क. सो व्हाट इज द डिफरेंस ये वाले में और ये वाले में? ये तो माइल्ड फोल्डिंग है. माइल्ड फोल्डिंग. ये कहां पर है? सबमेरीन. ओके. नाउ I have a thin potato chips, potato wafer, and I have NCRT. I press NCRT folds. Yes or no? NCRT folds. But if I do this to a potato chip, will it fold? What will happen? It will crack. So these oceanic plates, they are thinner. They don't fold much. If you put too much pressure, what will happen? They will crack. कौन fold करता है? NCRT कौन है? The continent one are the NCRTs. Continent one are NCRT. Anyway, that's my bad habit of starting to draw diagrams. Let us write down. Please quickly write down. जिन्होंने बनाया बनाया, नहीं बनाया तो भी मैं सब लिखवाने वाला हूँ. So please write down. कहाँ तक लिखा था वो भी तो छाप रहे थे हम. यहाँ तक छाप दिया था. Plate keeps on moving. Two plates converge. Fold mountains and associated events are created. Please write down. Plate convergence and subduction. Plate convergence and subduction lead to bending and folding of plates. Lead to bending and plate convergence and subduction lead to bending and folding of plates. The continental plate being thicker, the continental plate being thicker creates fold mountains, creates fold mountains, creates fold mountains like the Rockies, like the Rockies of North America and Andes of South America. Rockies of North America and Andes of South America. The plate which gets subducted, the plate which gets subducted, the plate which gets subducted melts and lead to
melts and lead to the eruption of melts and lead to the eruption of volcanoes. Eruption of volcanoes, both submarine, both submarine as well as both submarine as well as terrestrial. Volcanoes can come, submarine means underwater as well as terrestrial means on land. Get that? ये थोड़ा concept था. What are mountains? How they are created? Which mountains did I explain today out of the four? Only fold mountains. We have not talked about other four mountains. ठीक है? Other four mountains की बात बाद में करेंगे when they come over there. Please write down after this. North America fold mountain chains. North America fold mountain chains. North America fold mountain chains. Please write down. The western part of North America, the western part of North America has a clearly distinct north-south aligned, has a clearly distinct north-south aligned fold mountain range, a fold mountain system. North-south aligned fold mountain system. We had a question coming in previous years, alignment. So this is what? North-south aligned. Please write down. This system has been created. This system has been created due to plate convergence. Due to plate convergence along the Pacific Ring of Fire, along the Pacific Ring of Fire, of which this system has been created along the Pacific Ring of Fire, of which Western Northern America is an active part, of which Western Northern America is an active part. Everyone, this is Pacific Ocean. Now this is the boundary of Pacific Ocean. I find many islands over here. Why? Because this plate and this plate are converging. When the plates converge, do they lead to volcano? Submarine volcano? If the magma keeps on coming up and reaches above the surface of water, will it be called an island? तो जापान ऐसे बना, वोल्केनो से बना, फिलीपींस ऐसे ही बना. सो दिस इज द वेस्टर्न साइड ऑफ इट. अब हम ईस्टर्न में भी आते हैं, तो ईस्टर्न इज ऑल्सो, यहां पर भी प्लेट्स क्या हो रही है? प्लेट्स का कन्वर्जेंस हो रहा है. So when convergence is happening, definitely one plate is going beneath the other. It's going in the mantle. It will melt also, and volcano will also erupt. Volcano is associated with fire. So this whole boundary of Pacific Ocean, will it have volcanoes? This boundary is called Pacific Ring of Fire. Is North America a part of this Pacific Ring of Fire? So that is what we have written, that it is the western side is a part of the Pacific Ring of Fire. Please write down. Plate convergence in this region
plate convergence in this region has led to the creation of parallel the creation of parallel mountain chains, parallel mountain chains that include the coastal range, the Cascade range, and the Rockies range. The coastal range, the Cascade range, and the Rockies range. What are these? I told you what are these. These are parallel mountain chains. Are these parallel? In Spanish language, please write down. In Spanish language, such an arrangement in Spanish language, such an arrangement of two or more in Spanish language, such an arrangement of two or more fold mountain chains, two or more fold mountain chains is referred to as cordillera. Spanish भाषा में the word for two or more parallel mountain chains is cordillera. And this cordillera is famous. This cordillera of three ranges is famously called as Rockies Cordillera. So western side में we don't have one range. How many ranges do we have? C for coastal, C for Cascade, R for Rockies. And when we have two or more parallel ranges, the word used in Spanish language for such an arrangement is cordillera, and we call this as Rockies Cordillera. Please write down. Apart from this, the Alaska region, apart from this, the Alaska region also has parallel mountain ranges called Brooks and Alaska Range. Called Brooks and Alaska Range. This is the western side. This is the western side. Alaska Range region. तो यहाँ पर ब्रुक्स हो गया, अलास्का, कोस्टल, कैस्केड, रॉकीज. For the Alaska region happens to be Alaska region happens to be the highest region. Alaska region happens to be the highest region of this continent. The highest peak of North America as well as USA. The highest peak of North America as well as USA called Mount
called Mount McKinley or Mount Denali, the highest peak of North America as well as USA, called Mount McKinley or Denali, around 6193 meters, around 6200 meters, is located in is located in this range. Even the highest peak of Canada, even the highest peak of Canada, Mount Logan, even the highest peak of Canada, Mount Logan, is located in this range. The Western Fold Mountain System, the Western Fold Mountain System is a young fold mountain system, is a young fold mountain system. The Western Fold Mountain System is a young fold mountain system. Yesterday I told you young and old, so that means it has been created recently. So young fold mountain system as and is known for its high and mighty ranges, and is known for its high and mighty ranges. However, the eastern part of North America is is contrasting is contrastingly however the eastern part of North America is contrastingly old in nature. The old fold mountains of Appalachians, 5 हो गया, sixth, after 5 we have the sixth one, this is called Appalachians. The old fold mountain of Appalachians lie on the eastern side, lie on the eastern side, with Mount Michel, with Mount Michel being its highest peak. Appalachian, with Mount Michel being its highest peak. Having a height of nearly 2 kilometers, 2000 meters, having a height of nearly 2000 meters. The western side we had a height of 6200 meters. Here we have only 2000 meters because this is an old fold mountain. Get that? The western mountainous region is also popular for its
active volcanic peaks for its active volcanic peaks like St. Helena in USA, like St. Helena in USA. It is also popular for its active volcanic peaks like St. Helena in USA and Popocatépetl and Popocatépetl in Mexico. St. Helena in USA and Popocatépetl in Mexico. Mexico. These were the mountains and the peaks. Highlands. We are talking about highlands. We talked about mountains. Apart from mountains, the highlands also include plateaus. So please write down plateaus of North America. Plateaus of North America. Please write down the topography of North America. The topography of North America witnesses the creation of numerous plateaus of different types, numerous plateaus of different types. In bracket, you can write down intermontane plateau, the different types, Piedmont plateau, and volcanic shield plateau. Different types of plateaus, Intermont plateau, Piedmont plateau, and volcanic shield plateaus. The key intermontane plateaus have been created on the western side. The key intermontane plateau have been created on the western side in between the parallel ranges. In between the parallel ranges. Principal ones including Yukon Plateau, Columbia Plateau, Colorado Plateau, and Mexican Plateau. And Mexican Plateau. And Mexican Plateau. The the Piedmont Plateau are characteristically the Piedmont Plateau are characteristically found in the vicinity of characteristically found
in the vicinity of eroded old mountains. The one that is created to the western side, one that is created to the western side of, which is the old fold mountain, Appalachians. So to the western side of Appalachians is called the Cumberland Plateau with Allegheny Mountains. The plateau is called Cumberland, and some mountains are there, those are called Allegheny Mountains. The volcanic shield happens to be one of the volcanic shield happens to be one of the oldest rigid geological feature. The oldest, one of the oldest rigid geological feature called by various names that include Canadian or Labrador or Laurentian shield. The sixth one, it has different names: Canadian shield, Labrador shield, or Laurentian shield. So we have done 6 plateaus also, we did 6 mountains also. In between these mountains, what do we have? We have plateaus: Yukon Plateau, Columbia Plateau, Colorado Plateau, Mexican Plateau, Cumberland Plateau, and Canadian Shield. Please write down lowlands of North America. Lowlands of North America. In between the western and eastern, in between the western and eastern highlands, in between the western and eastern highlands of North America, in between the western and eastern highlands of North America lie the Great American Plains. The Great American Plains, or the Middle Plains of America. Great American Plains. And to the south, and to the southeast lie the Gulf Coastal Plains. Gulf Coastal Plains. Marking the huge expanse of lowlands in middle of this continent. Lowlands in middle of this continent. These plains are drained by
These plains are drained by major rivers. Major rivers, while depressions in these areas, while depressions in these areas happen to be the sites of lakes of this continent. Happen to be the site of lakes, happen to be the site of lakes of this continent. So what were we doing today? We were doing North America land lithosphere. We have identified highlands and lowlands. We have identified mountains. We have identified plateaus. We have identified the middle region, which is plains. And if there are depressions, those are lakes. Rivers and lakes, that is hydrosphere, we will be doing it in the next class. एक बार chat on कर दीजिए. It is 2:30. Class का time has been changed 12:30 to 2:30. If you want, I can give all this, whatever our notes are. I am very very sure that everyone who has attended the class, अब सबके पास कुछ है कि भाई हमने पैसा दिया, हमारे पास है, ये कुछ भी गलत नहीं है. Whatever I have given is all valid. If you think you can mug this up, please mug this up. And if you think that there should be some other way, it has to be through Atlas. But if the class is not interested in the Atlas, you don't want to look into the Atlas, carry the Atlas, I have no issues. 20 years of experience, मेरे पास बहुत कुछ है बताने के लिए. मैं मजे से लिखवाता रहूंगा, खूब सारा लिखवाऊंगा. I can also behave like a history teacher, polity teacher. And at the end of it, my syllabus will be complete. If that is what you look at. सर अपने तरीके से पढ़ाएं, मैं अपने ही तरीके से पढ़ा रहा हूँ, जो भी पढ़ाऊंगा अपने तरीके से. अब आइडिया ये है कि आप क्लास से क्या लेने वाले हैं. तो अगर आप क्लास से यही लेने वाले तो आई विल मेक एवरीवन हैप्पी. आपके पास कुछ होगा दिखाने के लिए, इधर भी है उधर भी है. सिलेबस जरूर कंप्लीट होगा. ज्योग्राफी आएगी नहीं आएगी, इट इज एब्सोल्युटली ओके. हर जगह यूपीएससी में जो पढ़ाते हैं सब्जेक्ट आपको आते थोड़ी. आपने जो सब्जेक्ट खत्म कर लिए वो आ गए हैं क्या आपको? अभी तो आप सोच रहे हैं, यू विल डू दैट. सो दैट कैन हैपन टू ज्योग्राफी ऑल्सो. इट्स ओके, आई विल फिनिश द सिलेबस, देन यू टेक चार्ज कि वी विल लर्न ज्योग्राफी आवर वे. प्लीज डू दैट. फास्ट और स्लो जैसा करोगे वैसे ही सेवा में रहेगा. यू हैव टुमारो आई एम नॉट टेकिंग अ क्लास, सो टुमारो फ्रॉम माई साइड इट्स अ हॉलिडे. कुछ आया कल के लिए? वो पूछना था ना, किसी से पूछा आपने? अरे वो अपडेट होने से पहले किसी से पूछेंगे तभी तो अनाउंस कर सकते हैं. अगर आप मुझे बता देंगे तो मैं अनाउंस कर लूंगा. मेरी तरफ से कल छुट्टी है. बाकी अब आपको नोटिफिकेशन में चेक कर लीजिएगा. ज्योग्राफी क्लास इज नॉट देयर टुमारो, एंड नेक्स्ट टाइम मैं ही पूछ के मैनेजमेंट से पूछ लूंगा. ठीक है. प्लीज टीच लाइक प्रीवियसली. आई एम नॉट गोइंग टू टीच लाइक प्रीवियसली इफ द क्लास, बिकॉज दैट टीचिंग रिक्वायर्स पीपल टू ओपन देयर एटलस. ठीक है. ये है ये वही है राहुल विश्वकर्मा. रिमेंबर, धीरे धीरे करिए. सर आपसे कुछ पूछने पर आप गुस्सा क्यों हो जाते हैं? पूछ सकते हैं भाई. आपको इसी तरह से राहुल विश्वकर्मा आपको इसी तरह से पढ़ा रहे हैं जैसा आपने कहा, आपके डिमांड पे कर रहे हैं. और ये है, आपसे ही पूछ सकते हैं ना. और ये पूछ क्या रहा था? ये वो राहुल विश्वकर्मा, इसको कोई अफसोस नहीं है कि जहां क्लास में कुछ नहीं हुआ था, इसी का क्वेश्चन था कि आप धीरे करिए, आप धीरे करिए. राहुल विश्वकर्मा आप ही मुझसे ही पूछ सकते हैं और मैंने आप ही के लिए किया, तो कम से कम थैंक यू तो बोल दो भाई. राहुल विश्वकर्मा आपसे नहीं पूछेंगे तो ये कल भी एक ने इमोशनल ब्लैकमेल खेला था. राहुल विश्वकर्मा आज आप जीते, आज आप जीते. आपके लिए धीरे धीरे लिखवाया. ठीक है. अभिषेक झा कह रहे हैं दिस इज द वर्स्ट वे ऑफ स्टडी, डिक्टेशन. आपके पास राहुल वर्मा वहीं पर हैं, राहुल विश्वकर्मा ये कल भी आएंगे, हर जगह आएंगे, ऐसे बहुत सारे होंगे. भाई मैं कोई गुस्से में नहीं, मैंने बिल्कुल राहुल विश्वकर्मा के स्टाइल में करा दिया. और क्या कराएं? ठीक है. सर आप एटलस से पढ़ाओ ना, कुछ जनों के लिए नहीं भाई. एटलस कैसे पढ़ाएं? आपको एटलस खोलनी नहीं है. और इस लिस्ट को ये राहुल विश्वकर्मा लिख रहा था और इसको लगा कि भाई ये तो बहुत तेज लिखवा दिया इन्होंने. और उसके बाद भी अभी ये है. मैंने कहा ना, ब्लेम आखिर में किसके ऊपर आएगा?
टीचर के ऊपर आएगा कि भाई साहब मेरे उस पर इसने वो किया। राहुल विश्वकर्मा पहले तो कम से कम इतना तो थैंक यू बोलो, आप ही के लिए आप ही की तरह पढ़ाया। सिर्फ राहुल विश्वकर्मा को ये था कि धीरे पढ़ाइए, लिखवा लिखवा के पढ़ाइए, कम से कम वो तो करिए। आपको लग रहा गुस्सा आ रहा, भाई आप ही की तरह से करवाया। बाकी लोग भी राहुल विश्वकर्मा के बहुत सारे समर्थक है, नहीं तो अब तक चैट में राहुल विश्वकर्मा के लिए आ जाता। सो एवरीवन इज ओके, सही तो कह रहा है यार। तो मैं बिल्कुल गुस्सा नहीं हो रहा, मैं अगली क्लास भी ऐसे ही करने वाला हूँ। मैं सारी क्लासेस ऐसे ही करने वाला हूँ। अगर आपको ये लगता है कि पीपल हैव दिस थिंग ऑल्सो, पहले पहले ये चैट भी ऐसे लिखेंगे, वो भी आप अपनी एटलस पे अगर काम कर सकते तो कल परसों देख लीजिएगा। वरना मैंने कहा राहुल विश्वकर्मा रिप्रेजेंट्स द मेजॉरिटी ऑफ दिस क्लास एंड मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स वो प्रिपेयरिंग फॉर दिस एग्जामिनेशन। अगर होता तो इस बैच में 62 लोग हैं, किसी को कोई दिक्कत नहीं है राहुल विश्वकर्मा से, किसी को कोई दिक्कत नहीं है राहुल विश्वकर्मा के कमेंट से। उल्टा मैं ही यहां पर हूं कि भाई साहब हम जो है वो कर रहे हैं, तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। सभी लोग नोट्स मिले। डू वी गेट दैट? सो थैंक यू, आई विल मीट यू डे आफ्टर टुमारो। बाकी राहुल विश्वकर्मा भी है, बाकी बहुत सारे, रिमेंबर पहले वाले से भी, अगर इनके मन की नहीं करो तो दिक्कत है। उसके बाद इमोशनल ब्लैकमेल ऑल करते हैं, कहते हैं कि भाई साहब आप जो है गुस्सा हो रहे हो। नहीं भाई गुस्सा नहीं हुआ, पूरा लिखवाया, बड़े मन से लिखवाया, चित्र के साथ लिखवाया। राहुल विश्वकर्मा ने इतना बढ़िया लिखा होगा, लाल पेन से भी लिख सकता है, बीच में कुछ वर्ड्स हरे से अंडरलाइन भी कर सकता है, हर चीज कर सकता है। सो इट्स एब्सोल्युटली ओके। मैंने कहा ना आपकी चैट में आप ही के कुछ लोग हाईजैक कर लेंगे, एंड आई एम ओके विद दैट। मेरे पास दोनों तरीके हैं, आई एम प्रिटी वर्सेटाइल, मेरे पास सारे तरीके हैं ज्योग्राफी करने के। इफ द क्लास इज ओके विद दिस थिंग तो मैं वो भी करूंगा, बट आई एम नॉट ओके विद पीपल फीलिंग हेल्पलेस इन फ्रंट ऑफ एन एटलस। एटलस का पेज खोलने में जो लोग डर रहे हैं वो भाई राहुल विश्वकर्मा है। और क्योंकि इनका नाम ले लिया तो ये पूरा नैरेटिव चेंज करके क्या कह रहे हैं कि सर गुस्सा है। नहीं नहीं, राहुल विश्वकर्मा आपके लिए किया, आप थैंक यू भी नहीं बोल रहे, तब से इसने थैंक यू भी नहीं बोला है। राहुल विश्वकर्मा कम से कम इतना तो दिखा दे भाई, इतना तो ग्रेटिट्यूड दिखा दो, आप ही की वजह से हुआ है। कहीं आप ही तो नाराज नहीं चल रहे हो कि आपका नाम आ गया इसलिए, तो कहाँ बच के जाओगे। मैंने कल भी कहा था चैट में, आप और मैं दोनों होते हैं। राहुल विश्वकर्मा थैंक यू तो बनता है, बाकी लोग भी कह सकते हो यार राहुल विश्वकर्मा से थैंक यू तो बुलवा लो। सर इसको छोड़ो, आप किसी को क्यों इतना वैल्यू दे रहे हो? अभिषेक झा आपने भी नहीं लिखा कि सर मुझे तो कोई दिक्कत नहीं है, आपने भी नहीं लिखा, आप भी नहीं कह रहे हैं कि राहुल भाई थैंक यू तो बोलो। इतना तो बनता है यार, पढ़े लिखे अगर आप हो तो थैंक यू तो बोलो। अगर आपको लग रहा है कि भाई मैं गुस्से में कर रहा हूं, मैं तो अपना मोड चेंज किया। आई हैव स्विचेस, वन इज ज्योग्राफी लर्निंग स्विच, अदर इज सिलेबस कंप्लीट स्विच, है ना? अभिषेक जाओ सर मैंने तो सभी लिखा है, वही तो मैं कह रहा हूँ, आप खुश हो, है ना? मैंने तो सभी लिखा है। राहुल विश्वकर्मा थैंक यू का इंतजार कर रहे हैं यार, थैंक यू बोलने में कैसे दिल कम हो रहा है? थैंक यू तो बोल दे यार। अब थैंक यू भी नहीं बोल रहा यार, तुम्हारी वजह से इतना कि अच्छे से नोट्स लिखा। बाकी लोगों के लिए अभी भी कह रहा हूं, देर आर मेनी पीपल हु विल लुक एट द एटलस, कांपेंगे, ऐसे कांप रहा है एटलस देखकर, फिर उस क्लास को कैसे पढ़ाएं? ठीक है। राहुल विश्वकर्मा, मैं एटलस में कंफ्यूज हो गया था भाई, थैंक यू का एक्सपेक्ट कर रहे, थैंक यू। तुम कंफ्यूज हो गए, मैंने पूरी क्लास चेंज कर दी भाई। तुम उल्टा मुझ पे कह रहे हो गुस्सा होके, प्रेम में, पूरे प्रेम के साथ पूरी क्लास। राहुल थैंक यू बोलने में क्या लग रहा है? कह रहा है एटलस में मैं कंफ्यूज, थैंक यू। मैंने कहा हमारे यहाँ पर क्रिटिसाइज करने वाले बहुत हैं, कभी थैंक यू बोलने वाले कम है, कभी थैंक यू तो बोल दे भाई। सुमित कह रहा है सर प्लीज हम बेसिक के लिए आपकी क्लास का वेट कर रहे थे। ये बेसिक ही है, स्क्रीन पर है, ये बेसिक ही पढ़ाया।
अपलैंड क्या होता है, लोलैंड क्या होता है, मैंने कुछ चेंज किया कि भाई? भाई सुमित कुमार शर्मा, इसके लिए थैंक यू तो बोल दो। बेसिक का वेट कर रहे थे, बेसिक बताया। एक और बताता हूं बेसिक। स्ट्रेट की डेफिनेशन क्या होती है? बेसिक। उसके बाद बताता हूं हाउ दे आर क्रिएटेड, बेसिक। फिर से बेसिक। प्लेट कैसे कन्वर्ज करती है, बेसिक। थैंक यू का इंतजार कर रहा हूं। सी, अभी भी राहुल विश्वकर्मा थैंक यू नहीं बोल रहा है। वो कह रहा है आप ट्रिगर हो गए, ये मेरा इंटेंशन नहीं था, थैंक यू। आप कब ट्रिगर हो गए? पूरा बैच कह रहा है थैंक यू बोल दो भाई, थैंक यू। राहुल विश्वकर्मा थैंक यू। सॉरी तो चाहिए नहीं, सॉरी तो है ही नहीं। नीलम कह रही है कि नेक्स्ट टाइम एटलस प्लीज। मैं तो एटलस से ही चलता हूं, मैं आपसे कह रहा हूं एटलस प्लीज। ये सुनो, बट राहुल विश्वकर्मा नहीं बोलेगा थैंक यू। क्यों नहीं बोलना है? आप समझ सकते हैं, ट्रिगर भी मैं हो रहा हूं, एंग्री भी मैं हो रहा हूं, सब कुछ हो रहा हूं, लेकिन वो थैंक यू नहीं बोलेगा क्योंकि उसके लिए किया है। तो अब कम से कम इतना कॉन्वर्सेशन, सी आई एम अ टीचर विद अ लॉट ऑफ एक्सपीरियंस एंड एवरीथिंग एट स्टेक। राहुल का कुछ नहीं जाने वाला, मेरा तो जाएगा ना, जाएगा कि नहीं जाएगा? अब आप सोचिए सारे में वो व्यक्ति थैंक यू क्यों नहीं बोलना चाहता, तो ट्रिगर कौन हुआ? भाई मैंने तो आपके लिए राहुल चेंज कर दिया, आपके लिए पूरा चेंज कर दिया। थैंक यू नहीं बोलेगा, क्यों? पैसा दिया हुआ है। ये मास्टर बोलेगा, अगर ऐसे नहीं बोलेगा तो हम उसको इमोशनल ब्लैकमेल भी करेंगे। मेरा इंटेंशन ये नहीं था, आप तो ट्रिगर हो गए ना। थैंक यू तो लेके जाऊंगा भाई। तुमने जो जो करवाया मुझसे भाई, थैंक यू तो लेके जाऊंगा। मनीषा, सर इफ यू हैव चेंज योर टीचिंग जस्ट फॉर 1%, देन हाउ यू आर, हाउ समथिंग समथिंग, पता नहीं क्या कह रहे हैं। एक बात बताओ मनीषा यादव, जब वो 1% बोल रहा था, डिड यू से कि भाई नहीं, वी आर ओके विद दिस, स्पीड इज फाइन, वी आर ओके, वी आर अंडरस्टैंडिंग दिस? तब तो आप चुप थे। आपको पता है कितने लोग दिल्ली में ये जो कह रही हैं फ्रिंज एलिमेंट्स इन द सोसाइटी, ऐसे ऐसे कह रही हैं। डू यू नो दिल्ली में अभी जो पोल्यूशन के अगेंस्ट जो प्रोटेस्ट हुआ था AQI के लिए, विच इज बिकम एन इंटरनेशनल इशू, डू यू नो हाउ मेनी पीपल रीच देयर? 24 people. Delhi with a population of 2 crore, how many people reached? 24 people reach for protest. उनको उठाने में पुलिस को सोचना भी नहीं पड़ा। एंड नाउ somebody is giving me a part, एक व्यक्ति के लिए आप ऐसे कर रहे हो तो आपको कितने सारे फ्रिंज एलिमेंट। नहीं भाई, मैं आपसे कह रहा हूं, अगर आपको ये समझ में आ रहा है एटलीस्ट, कम से कम मनीषा जी आप बोलेंगी तो या नहीं बोलेंगी? अगर आपसे ये, इमेजिन हाउ मेनी टीचर्स आर हैविंग दिस चैट, इतना आपको इंटरैक्टिव चैट मिला हुआ, उसमें आप टीचर को उल्टा सीधा कर दो तो अगली बार कोई भी टीचर हिम्मत करेगा आपसे एंगेज करने का? एक थैंक यू ही तो बोल रहा हूं यार। आई जस्ट सेड थैंक यू भाई, आई डिजर्व दैट। I was trying to teach you in a particular way. There were definitely a lot of students who wanted it to be that ways, but we did not see it coming over there. It never came. अब क्योंकि आपकी तरह से कह रहे थैंक यू भी नहीं बोलना, ऊपर से ये आप फ्रिंज एलिमेंट से कैसे डील करोगे? फ्रिंज, अगर आप मेन स्ट्रीम हो, शो यू आर मेन स्ट्रीम। आप चैट ऊपर पढ़ लीजिए, आप चैट ऊपर पढ़ लीजिए। व्हेन ही स्टार्टेड डूइंग दैट, व्हेन ही इज डूइंग दैट, आपने कहीं मेन स्ट्रीम दिखाया मनीषा? तो मेन स्ट्रीम कहीं थी नहीं वहां पर। सो व्हाट हैपेंस इज, व्हाट डिड द गवर्नमेंट से? गवर्नमेंट सेड दैट ऑपोजिशन वालों ने कुछ लोगों को सरकार को बदनाम करने के लिए वहां पर भेजा था। व्हाट डिड द ऑपोजिशन ने किया? ये लोग, देयर इज नो प्रॉब्लम विद पॉपुलेशन। सो एंड में क्या होगा? टीचर गॉट ट्रिगर्ड। टीचर से सवाल पूछो तो ये गलत हो जाएगा। भाई हम नहीं जा रहे, हम पूरा थैंक यू लेके जाएंगे भाई। पब्लिक डिमांड पे वो कर रहे हैं, ये सुनो।
अब ये भी परेशानी है, दिखा रहे राहुल विश्वकर्मा। बेटा जो आपसे कहा वो दिखाते छुट्टी वाला, वो तो मुझे भी मिल गया। छुट्टी वाला तो बता नहीं पाए भाई, ये हमारी टेक्निकल टीम है, छुट्टी तो बता नहीं पाए। ठीक है, सो लेट्स नॉट मेक फन ऑफ दिस। You know your teacher is capable of both the things. Your teacher is capable of both the things. Why I change? Not because of online students. वो तो राहुल का तो किया ही किया, जैसा उन्होंने कहा। ऑफलाइन स्टूडेंट्स भी अपनी एटलस में 2 पेज नहीं खोल पा रहे। That is not done. Yes or no? North America, which we have been talking about, why not? True? So can I expect you? Everyone tell me. It's been 3 days, 3 classes. Yes? Is it a new way? It is a new way. Am I being patient? बट अगर आप उसमें एटलस खोलोगे भी नहीं, ये तो गलत हो जाएगा यार। और क्योंकि आपकी चैट पढ़ रहे हैं तो आप उसमें ये दुनिया का वो फ्रिंज एलिमेंट और ये सब करके वो भी करोगे। करना क्या है, आपको जाना है, अपना होमवर्क करना था। 7 कंट्रीज जिसने भी किया है, that person would be easily participating in that exercise. Which country touches the sea, which does not touches the sea? Why did I do that? वो भी आपको पहले बताया, पहले क्वेश्चंस दिखाए सभी लोगों को कैसा आता है यूपीएससी में। यूपीएससी में माउंटेन अलाइनमेंट भी आता है, मैं तो वैसे ही करूंगा कि यूपीएससी के हिसाब से आई विल बी डूइंग दैट, बट देयर विल बी समथिंग ऑन दैट, दैट्स देयर, बाकी इज अप टू यू। मैंने कहा ये चैट खोलने का मतलब इज ओपनिंग अ पेंडोरास बॉक्स। Everyone can say anything and everything, and who is at stake? हम ही हैं। So I would really want you to think about it. आप ही के क्वेश्चंस का आंसर दिया, आप ही की तरह से पढ़ाया। सर प्लीज एक्सप्लेन लिथोस्फेरिक प्लेट ब्रोकन अराउंड द वर्ल्ड, आई डिड नॉट गेट इट। भाई रिपीट, अब एक्सप्लेन तो है ही नहीं ना, कहीं पर लिख के दिया सब। ये डॉक्यूमेंट्स आर कॉल्ड ब्रोकन प्लेट्स। आई कैन एक्सप्लेन ऑल्सो, बट एक्सप्लेन कब करें? आप तो डिक्टेशन के लिए, आप लोगों को नोट्स लिखे हुए हैं, क्योंकि स्लो चल रहा है, तेज चल रहा है। वेयर इज द स्कोप ऑफ एक्सप्लेनेशन व्हेन देयर इज स्कोप ऑफ ओनली राइटिंग? इट्स अप टू यू, इट्स अप टू यू। वो पहले दिन भी किसी ने चैट किया, उसके बाद उसने बोला इनका स्टाइल ये है, कुछ हंसाएंगे, कुछ रुलाएंगे, कुछ फिकाएंगे। आई सेड भाई वो चैट इज नॉट फॉर दिस। अभी ये है, आपकी मर्जी है भाई। योर टीचर इज वर्सेटाइल। if you continue with this, I will do that also. It's up to you. मैंने कहा थैंक यू, बोलने में बहुत दिक्कत होती, इसलिए मैंने रुकवा दी क्लास। मैंने कहा कम से कम ये तो बनता है यार, टीचर ने भी अपने मन पे पत्थर रख के पढ़ाया होगा ऐसे। आप लोगों को बुरा लग रहा था, आपको लग रहा है कि मुझे जो है बहुत अच्छा लगा, मेरी अपनी किडनी हिल रही थी, बट एक के लिए करवाया यार, एक के लिए करवाया। टीचर गोज अगेंस्ट हिज ओन स्पिरिट एंड सोल विच रियली ट्रांसफॉर्म्स, उसका भी मजाक बना लो यार कि भाई ये तो गुस्से में करा है। नहीं नहीं नहीं, आपके लिए पब्लिक डिमांड में यार, हो गया पब्लिक डिमांड, कर लो। I do not know how many teachers are going to do that they will change their mode for you. But I change it. I change it to give it the way you want it. And I know it is not a very effective way. It's just that you chose it and you have to say whatever, that is also there. And I also, ऑनलाइन स्टूडेंट, आपको भी लगे कि यार ये क्लास 2 घंटे कहाँ निकल गया, हमारे लिए भी इंटरैक्टिव है, इसलिए इसको खोल के रखते हैं चैट। आपको वो भी बंद करवाना है, हम वो भी कर सकते हैं। We are absolutely okay with this. So I'm not here to get this thing praise for me. अच्छा टीचर, बुरा टीचर, I want अच्छा सब्जेक्ट, बढ़िया सब्जेक्ट, and I can get confidence about that. What I have earned, I know what I have earned. I really do not need anything for that कि अच्छा पढ़ा रहा है, बुरा पढ़ा रहा है, वो आपके ऊपर हो सकता है। I said this is not a YouTube channel where you are using it to praise or to troll someone. Then this is your class, own it up. There are things which we have to do, and particularly online students, if you are sitting without an atlas, it's a problem. Please keep your atlases with you. Thank you. Take care. I'll see you day after tomorrow. Jai Hind.